Today we will discuss about the intensity of magnetization. What is intensity of magnetization? So in previous lecture, what I have told, due to revolution of electron, what happen? It behaves like a small magnetic dipole, and that have magnetic dipole moment. Also, we have given relation magnetic dipole moment is equal to what? Geographic ratio into angular momentum. ठीक, तो E upon 2m times of angular momentum, magnetic dipole moment. But each atom have magnetic dipole moment, but their orientation may be in any direction in the element. So that what happens generally, total magnetic moment combining all atoms, so they are zero. But in some materials, their orientation are such that they have some net magnetic dipole moment. So individual atom has magnetic dipole moment and combine has also मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. तो हम कुछ मटेरियल की बात करें तो उनका कंबाइनिंग भी क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है. ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे भी होंगे, मटेरियल्स होंगे कि दे हैव नॉट कंबाइंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इंडिविजुअल है बट कंबाइनिंग ना, बिकॉज the vector sum of all magnetic dipole moments they are zero. Orientation some has in positive direction to some has negative. ठीक है, they all combining zero. But they have some materials, ठीक है, like iron, तो they have their net magnetic dipole moment. तो net magnetic dipole moment per unit volume is known as intensity of magnetization. तो actually में what is intensity of magnetization, या उसे मैग्नेटाइजेशन भी कहते हैं, तो m से डिनोट करते हैं, कैपिटल M इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गिवन मटेरियल. ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मटेरियल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन. ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, एम्पियर पर मीटर. अच्छा, वन अनदर थिंग, here some confusion is there. Intensity of magnetization, here also magnetic intensity vector या magnetic field intensity B को भी जनरली हम क्या कभी कभी क्या कहते हैं, magnetic intensity. तो slight confusion is there. ठीक है, here also intensity, यहाँ भी intensity. इसको जनरली कभी कभी हम इंटेंसिटी के फॉर्म में या है राइट ऑन इंटेंसिटी लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. तो देयर आर मेनी कंफ्यूजन्स. तो टुडे वी विल क्लियर ऑल कंफ्यूजन. हम सभी कंफ्यूजन्स क्लियर करेंगे आपको. यहाँ सुनो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैंने अभी बता दिया, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वैल्यू. ठीक है, स्लाइट विल टेक एग्जांपल ऑफ सपोज ए सोलेनॉइड. ठीक है, व्हेन देयर इज नो मैग्नेटिक मटेरियल इनसाइड सोलेनॉइड, तो व्हाट वी नो, द मैग्नेटिक इंडक्शन of this solenoid B naught is equal to what, कितना होता है बेटा, म्यू नॉट एन आई. म्यू नॉट इज व्हाट, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, एंड एन आई, ठीक है, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, आई इज करेक्ट. तो हियर वी कैन सी, ठीक है, कि टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन डिपेंड्स अपॉन which factor, n and I. But when we introduce some material inside this, what we have seen, that magnetic induction B has increased. So this magnetic induction has increased while we have kept this Ni is same. So this becomes mu now. In place of mu naught we are putting mu. So this mu is what we call, this is absolute permeability of medium or material which I have kept. So here we can see, ठीक है, कि magnetic induction depends upon, if we are increasing n, also magnetic induction both cases increases. If you will increase I, magnetic induction increases. You have changed the material, magnetic induction. So magnetic induction depends upon
two factors. One is Ni, another is material. So this Ni we have taken a separate physical quantity. This Ni we have taken a separate physical quantity and denoted by H. This physical quantity is known as magnetic intensity vector or magnetic field intensity. बच्चों ध्यान देना कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, ये एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है, विदाउट मटेरियल विच इफेक्ट्स द मैग्नेटिक इंडक्शन, उसको ही हमने क्या किया बेटा, वी हैव टेकन ए सेपरेट फिजिकल क्वांटिटी एंड दैट क्वांटिटी इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. तो हम ऐसे भी कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ and electric current flowing through the solenoid. ठीक है, तो एक नया हमने फिजिकल क्वांटिटी देखा एंड दिस फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज मैग्नेटिक इंटेंसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. तो हियर वी कैन सी व्हाट आई हैव टोल्ड, दिस मैग्नेटिक इंडक्शन, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, जो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन. It depends upon two things. One is what? If we are putting here Ni as H, it depends upon H, magnetic field intensity, and also it depends upon when material we have kept, this magnetic induction has changed. So that also depends upon why it has changed, because material which kept inside this solenoid, they have a magnetization, individual magnetic moments are there. So due to this magnetic moments, what happened, induction has increased. So we can say that this magnetic induction, here V naught we will take. So this magnetic induction B depends upon two factors. One is what, magnetic field intensity H, that is Ni, and another is what, intensity of magnetization M, which is based upon material, which depends upon material. बहुत important चीज मैं बता रहा हूँ, एकदम क्लियर करके ध्यान से अगर समझोगे तो ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन है, कंप्लीट इफेक्ट ये दो चीजों पर डिपेंड करता है. एक तो तुम्हारा किस पर डिपेंड करेगा बेटा, H पे, H मीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और दूसरा डिपेंड करेगा किस पर, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी मटेरियल का है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मटेरियल का, उस पर डिपेंड करता है. यानी वी कैन से दिस B इज इक्वल टू दिस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है, व्हेन वी हैव केप्ट मटेरियल इनसाइड आल्सो, तो B इज इक्वल टू व्हाट, B नॉट मीन magnetic field induction when there is no material plus magnetic field induction due to material, यानी due to magnetization, दोनों चीजों पर डिपेंड करेगा. ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, ठीक है, वो एक्सटर्नल फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट. मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो है that is equal to mu naught times of external factor. Here external factor is H, and when we have inserted magnetic material, so their external factor is magnetization. तो अगर हम ध्यान से कहें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं B is equal to B naught, मतलब mu naught times H होगा. Bm क्या होगा बेटा, एक्सटर्नल फैक्टर, यहाँ पर क्या है, मैग्नेटाइजेशन, तो म्यू नॉट टाइम्स क्या होगा बेटा, m होगा. तो वी कैन से कि मैग्नेटिक इंडक्शन टोटल कंबाइन व्हेन मटेरियल इज इंट्रोड्यूस, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट M. अच्छा, एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है कि व्हेन वी हैव अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड या फील्ड ड्यू टू H, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो what we have seen,
मैग्नेटाइजेशन इज इंक्रीजेस, जैसे जैसे इफ Ni फैक्टर वी हैव इंक्रीज, हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज किया कॉइल का, ठीक है, तो हमने क्या देखा बेटा, मैग्नेटाइजेशन और बढ़ गया। मीन मैग्नेटाइजेशन आल्सो डिपेंड्स अपॉन एच। ये जो मैग्नेटाइजेशन है, क्यों? क्योंकि क्या होता है, ठीक है, ओरिएंटेशन ऑफ इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट्स समटाइम्स इधर एक रे चारों तरफ होते हैं, ठीक है, फिर भी नेट डायपोल मोमेंट है, लेकिन जैसे एक्सटर्नल फील्ड लगा तो सबके ओरिएंटेशन क्या होता है, अलाइन, एक तरफ अलाइन होना शुरू होते हैं। तो जैसे जैसे अलाइनिंग विल इंक्रीज, व्हाट हैपन, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल इंक्रीज। तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम मैग्नेटाइजेशन इज आल्सो इंक्रीज। तो व्हाट वी विल से कि m जो है, intensity of this magnetization also proportional to external factor due to what, Ni, mean m also proportional to h, so one proportional constant comes, m is equal to, and that is known as susceptibility. तो दिस कांस्टेंट, इसी कांस्टेंट को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, susceptibility of material. So this constant is called susceptibility of material. ये जो मटेरियल है उसकी सस्पेटिबिलिटी जो है उसको हम डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड सस्पेटिबिलिटी ऑफ मटेरियल. What I have shown you, magnetic susceptibility for isotropic material, m directly proportional to h, so m is equal to, this is called susceptibility of material. This pure constant is there. Here is susceptibility of material. ठीक है. Later we will see that susceptibility depends upon diamagnetism, it is negative, para, फेरो, ठीक है. तो we will see here, फेरो मटेरियल्स के लिए काफ़ी बड़ा होता है वैल्यू. अगर हम किसकी बात करेंगे बेटा, पैरा के लिए तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, लेस देन 1 होगा. तो ये विल सी देयर सस्पेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, डायमैग्नेटिक, पैरा, फेरो, क्या क्या होगा. तो हियर व्हाट वी हैव सीन कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट M. तो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से, वी ऑल्सो वी कैन डिफाइंड H को हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा, डिफाइन कर सकते हैं. कैसे? अगर मैं H को यहाँ पर डिफाइन करूँ, म्यू नॉट आई हैव टेकन कॉमन, तो दैट इज H प्लस M. म्यू नॉट आई हैव टेकन लेफ्ट, तो B अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू H प्लस M. एंड here also m you have taken left, so H is equal to B upon mu naught minus M. So we can find one relation also. एक छोटा सा रिलेशन भी देख सकते हैं, H is equal to B upon mu naught minus M. We are going to find the relation between susceptibility and relative permeability and absolute permeability. So see what I have shown here. B is equal to what? B is equal to mu naught H plus M. Mu naught H plus M. M is equal to what? In terms of susceptibility, ठीक है, तो दिस म्यू नॉट H1 प्लस susceptibility. तो we can show here B is equal to what? Net magnetic induction when material is introduced. So that is mu naught 1 plus susceptibility into H.
This will be the formula for magnetic induction when material is induced. So what we know, when material is induced, to B is equal to what? In terms of external factor, to B is equal to what? Mu into H. That H, mu is absolute permeability of medium. Here mu is what? Mu is absolute permeability of medium, या material introduce. ठीक है, तो if you are comparing from this, तो what you will say? Compare this. So comparing, what you will find? Comparing, so mu is equal to what? Mu naught 1 plus susceptibility, or mu upon mu naught. Mu naught I have taken left hand side, so this is called mu r, relative permeability. Mu naught I have taken this, so 1 plus susceptibility. So this is called relative permeability. So relative permeability, mu r is equal to 1 plus susceptibility. So one very important relation we have founded, relative permeability, mu r is equal to mu upon mu naught or 1 plus susceptibility. So some relations we have founded. This relation and also this m is equal to susceptibility. तो here we can remove all our confusion. हम सभी अपने confusions दूर कर सकते हैं. मैंने बताया बेटा, intensity of magnetization that depends upon material, that is denoted by capital M. एक है magnetic field intensity, external factor. In solenoids we are using external factors due to which magnetic induction we can increase or decrease. That external factor Ni, ठीक है, we have introduced with the new physical quantity that is called magnetic field intensity H. H is equal to Ni, and the net magnetic induction depends upon both external factor Ni and also the material kept inside the solenoid, that is magnetization. So B is equal to B naught plus Bm, or mu naught H plus mu naught M, and M also depends upon external magnetic field intensity H proportional for isotropic material, M directly proportional to H. M is equal to a constant is there, that is called susceptibility of material. And what are the relation between relative permeability? So this relation you have to know, mu r is equal to 1 plus susceptibility. So this thing we can note and we can derive these derivations. हम इस derivations को क्या कर सकते हैं बेटा, derive कर सकते हैं. एक बार मैं फुल फिर से रिवीजन आपको मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन सबका रिलेशन फिर से एक बार दिखा रहा हूँ. When we have not introduced any medium, तो magnetic field intensity B naught is equal to mu naught Ni, that is mu naught H. H is magnetic field intensity. When we have introduced a material, so net magnetic induction, that is mu times of Ni. Here mu naught is permeability of absolute permeability of free space. Here mu is absolute permeability of material or medium kept inside the solenoid. ठीक है, तो what I have told that B depends upon two factors. One is what? H, and second is material, magnetization of material. So B is equal to what? B naught plus Bm. B naught
free space, and Bm due to material magnetization. So we can say here mu naught B naught is equal to mu naught H, and Bm is equal to what? Mu naught due to magnetization, mu naught times. Okay. So one thing I also have told कि M directly proportional to magnetization also increased when we have external factor N or I, mean H increased for isotropic material. So B M proportional to H, so M is equal to a constant. This is called susceptibility. If you are putting here, so B is equal to mu naught H plus susceptibility mu naught susceptibility H. So mu naught you have taken common, H common, so 1 plus susceptibility, and B is equal to what? Mu into H. So if you are putting here B is equal to mu H, here mu is absolute permeability of material. So this is mu naught 1 plus susceptibility into H cancel. So one relation mu is equal to mu naught 1 plus susceptibility. अच्छा, mu upon mu naught is equal to 1 plus this, and mu upon mu naught, this is called mu r. This is called relative permeability. So relative permeability of material ability is equal to 1 plus this relative permeability is similar to dielectric constant relative permittivity in electrostatic chapter. ठीक है, here relative permeability, so that is mu r is equal to 1 plus susceptibility. So this total theory I have explained in a row. To see one problem is there. Magnetizing field of material 1500 ampere per meter produces a magnetic flux 2.4 into 10 raised to minus 5 Weber in a bar of iron cross section 0.5 cm square. Calculate permeability and susceptibility of iron bar. So see, this is magnetizing field intensity, mean external field there. So this external field we are denoting by H. H is equal to 1500 ampere per meter. Magnetic flux produced is 2.4 into 10 raised to minus 5 Weber. Area is 0.5 cm square. So centimeter square, if you are converting into meter, so 0.5 into 10 raised to minus 4 meter square. What magnetic induction is produced? Magnetic induction, magnetic flux per unit area, that is magnetic induction. So what will be the magnetic induction? 2.4 into 10 raised to minus 5 divided by, so this has come point cancel 10 raised to minus 1, so that will come 5 4s 4.8 10 raised to minus 1, so minus 0.48 Tesla. So this will be the magnetic field induction. HB, you know, the B is equal to what? Mu times H, mean mu is equal to B upon H. So we can find the permeability of iron. So what will be the permeability of iron? 0.48 divided by H. H is 1500 ampere meter. So we can find this 48 upon 15 10 raised to minus 4. So that has come
5 3s are 3.2 into 10 raised to 4. So this will be the value of permeability. This is the permeability of material. Magnetic material permeability we have found it. Mu we have found it susceptibility. So what a relation I have given, mu r is equal to 1 plus susceptibility. So susceptibility is equal to what? Mu r minus 1. So what will the mu r? Mu r mean mu upon mu naught minus 1. So mu 3.2 into 10 raised to minus 4. म्यू आर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? तो दैट इज 2 पाई इंटू 10 रेज टू माइनस 7 minus 1. So you can calculate this. 2 into pi mean 3.14. If you are putting all the values, so you will get here, sorry, mu naught is 4 pi into 10 raised to minus 7. So this comes around 255 minus 1. So that is 254 will be the susceptibility of material. You can calculate it. 3.2 divided by 4 pi 10 raised to minus 7. So you will calculate, nearby it comes 255 minus 1. So that is 254. So we have seen by one example how can we calculate susceptibility and permeability of iron or material.